नरोत्तम करो दया Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya असम जो महाराज का मुखारविंद से सुनने का मौका मिल रहा है। मैं रूपन प्रभु को अभ्यर्थन करता हूँ कि महाराज को माला डालने के लिए और डोली और जॉय महाराज का इंट्रोडक्शन देगा। Hare Krishna, Dandavat Pranam, all glories to Srila Prabhupada. I am Tuli and my brother Joy.
we are here to introduce today's speaker, His Holiness KAVICHANDRA Swami Maharaj. Maharaj met the Hare Krishna devotees in 1967 and was initiated by Srila Prabhupada in 1971. He joined the temple in Tucson, Arizona, and since that time he served in various capacities in the United States and around the world. Some of these services include from 1973 until 1977 itinerant selling of Srila Prabhupada's books to libraries, universities and individuals, further to preaching Krishna consciousness in Fiji. He also served as the general manager for the Radha Rashi Bihari temple in Juhu, India and as temple president in Tokyo, Japan. In Japan in 1982, KAVICHANDRA Swami Maharaj took his sannyasa. 5 years later, Maharaja started to serve as GBC member for Japan. Gradually, his GBC responsibilities expanded from Japan to culturally diverse places, such as Thailand, Indochina, Indonesia, Greece and West Africa. KAVICHANDRA Swami Maharaj is also a committee member of the GBC Executive Committee, Iskcon Law Committee and Revision Committee. KAVICHANDRA Swami Maharaj invests time in devotee care by writing articles, participating in conferences and vigorously encouraging of others to put effort into making it a priority. Let us welcome Maharaj loudly by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness KAVICHANDRA Swami Maharaj ki Divine Grace Srila Prabhupada ki Maharaj, they want to garland you, Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. महाराज का क्लास तो इंग्लिश में होएगा, मैं प्रयत्न करेगा कि थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलने के लिए. Very big crowd here. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesha Sunivani Paschacha Desatarini. Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Vivacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostu Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sule Devi Pranamami Hare Priya. Alright, thank you very much for having me. It's a very interesting honor. So many devotees. This is a special arrangement of Lord Chaitanya. महाराज बता रहे हैं कि सभी को धन्यवाद बता रहे हैं कि महाराज बहुत खुश हैं और ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा
कृपा कटाक्ष है कि हम सब एक साथ मिल रहे हैं। He's sending devotees all over the world to take birth on so many places, or they just go there. बहुत जगह पे हमारा जन्म होता है, बहुत पूरा दुनिया में, लेकिन कृष्ण भावनामृत में जुड़ने का ये बहुत अमूल्य अवसर है। So like here, you can't preach to the local people, but the fact that devotees are chanting all over is purifying the atmosphere. इधर ये जो जगह पे है, हम कृष्ण भावनामृत जो इधर रहने वाले को प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम बहुत अच्छी तरीके से कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं और ये जगह शुद्धिकरण कर रहा है। The vibration of the holy name we can hear with our ear, not very far away. जो Right? कृष्ण का नाम जो है वो हम सभी सुन पा रहा है और दूर से भी वो सुनने का मौका मिल रहा है। But it goes into the ether and stays. ये जो ईतर Akash. आकाश में Thank you very much, Maharaj. So that's how Lord Chaitanya is getting people chanting all over the world. ऐसे चैतन्य महाप्रभु सभी जगह पे कृष्ण का नाम प्रचार कर रहे हैं। And that's what's needed. The people need to. Prabhupada, he said, let them chant Allah or Jesus or Jehovah or Buddha or whatever, but they should be chanting the name of God. प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर जीसस का नाम है या अल्लाह का नाम है, जेहोवा का नाम है, सब कहने का रेडी है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम करो। That's a tradition everywhere. वो सभी जगह का ट्रेडिशन होता है। Buddhists still have beads. Chant. बुद्ध मत में जो हमारा जैसा मणि होता है, जो Many Muslims have beads and chant Allah, Allah, Allah. I haven't seen here, but we used to see in Bombay. I saw जो मुसलमान लोग हैं वो भी Arabs would come. मणि के Now they're changing. अल्लाह का नाम पे जप कर रहे हैं। Prabhupada, he was in Iran. प्रभुपाद जब ईरान गया, And there was some, I don't know, the reporters, they were young and intellectuals. तो उधर जो पत्रकार था जो रिपोर्ट कर रहा था, And they said, we chant 3 times. And we और do namaz. रिपोर्टर बता रहा है कि वो दिन में 3 बार। And it's also interesting that namaz, namaste, तो नमाज और नमस्ते तो दोनों नाम मिलजुलता है। but Prabhupada said, Muhammad said 5 times. प्रभुपाद बता रहा है कि 5 बार नमाज। And they said, no, we, and I think they're doing that here now. They mix the midday one with there's a morning, and then there's a middle morning, and then mid-afternoon. So they merge those into the noon time or something. So they do 3 times. तो इधर हो सकता है कि 3 बार होता है। And Prabhupada said again and again, Muhammad said 5 times. प्रभुपाद बता रहा है कि मोहम्मद ने 5 बार करने का बताया। They also said, how many Hindus pray 5 times a day? और ये भी पूछा है कि 10 dirhams। Not very many. मोबाइल में They don't have that kind of regulation. तो But हमारे it's good. वैसा रेगुलेशन नहीं है इधर। And we want to encourage people to follow that. Whatever your tradition is, you should follow it. तो हम ये प्रेरणा कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशन है उसको आचरण करने का। And we chant, of course, we're supposed to chant a lot, all the time. तो हम भी जप करता है, But at least every day a certain amount. And devotees nowadays in their home, they have artik twice or something. तो घर पे भक्त लोग 2 बार करता है, Many people even more than that. किसी भक्त उससे भी ज्यादा करता है, 2 बार से ऊपर करता है। And Bhagavad Gita is going over Srimad Bhagavatam says.
और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का तो पाठन भी हो रहा है। It's quite amazing how many Srimad Bhagavatam sets are being distributed now. अभी ये सोचने का आश्चर्यचकित है कि कितना श्रीमद् भागवतम का पुस्तक वितरण हुआ है। Hopefully people will read them. और जो लोग खरीद रहे हैं वो पढ़ने का भी कोशिश करना Right. चाहिए। Does anybody here have the Srimad Bhagavatam set? I've seen it in a lot of houses. किसके पास श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट है जो इधर है? Should be more. इससे भी ज्यादा होना चाहिए। This श्रीमद् season, this Bhadra Purnima is coming. भद्र पूर्णिमा महोत्सव आ रहा है तो उसके उस अवसर पे श्रीमद् भागवतम का And that, it says that on that Purnima, if you give the Bhagavatam as a gift, तो वो भद्र पूर्णिमा का समय पे भागवतम सेट वितरण करना चाहिए, दान देना चाहिए। to Goloka. तो गोलोक वृंदावन पहुंचने का It's supposed to be you give it on a golden throne. तो Now it's Kali Yuga, you don't have to do that. स्वर्ण आसन पे वो देना के साथ देना चाहिए। Are you broadcasting? Or just रिकॉर्डिंग so, but we can imagine if you're giving someone in a box, it's a golden throne cardboard because it's manasa puja, you know. तो अगर जो दान देने वाला है वो मन ही मन देखना चाहिए कि वो स्वर्ण आसन पे श्रीमद् भागवतम का वितरण कर रहा है। We're looking for. I was in Israel. There's a Jewish group called Kabbalah. तो इसराइल में एक ग्रुप का नाम है कबाला। They don't get along with the other ones, you know, like everywhere. वो दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं जाते। But they have this book. It's quite a huge thing. तो उसके पास ये पुस्तक है। And some very rich man, he sponsored like thousands of those. तो जो बहुत धनिक जो लोग हैं वो And it was in this 1000 कॉपी ancient दान दे रहे language. हैं। In this ancient language that nobody can read. तो पुरातन लिपि में है, वो कोई पढ़ नहीं पा रहा है। And they were giving it away like to everyone. वो दान दे रहा था। And he said, even if you can't read this, it has a vibration, and this is good for you. तो अगर वो पढ़ भी नहीं सकता है फिर भी उसका वाइब्रेशन And कंपन का महसूस कर सकता है। I remembered I used to say that all the time to people. Yeah. When we try to sell books in America, oh, I don't read. I won't read it. You know, don't waste it on me. Give it to someone else. जब मैं प्रचार Trying to be polite. Otherwise, they say, I don't believe in God. I don't want to leave it. जब महाराज प्रचार कर रहा था अमेरिका में, तो जो भक्त लोग जो लोग महाराज के पास पुस्तक लेने के लिए आता है वो बता रहा था कि मैं पढ़ूंगा नहीं। तो महाराज बता रहे थे वो वाइब्रेशन के महात्म्य बता रहा था। But people like this, you know, mystical people. They like this vibration and all that. So they tell them this book is a living thing. It's not just a big paper. It's not just paper and ink. And if you keep this in your house, it's good for you, even if you don't read it. तो ये It's true. तो ये सत्य है कि ये It's Krishna. पुस्तक Better you read it, but अगर पढ़ भी नहीं गया फिर भी घर पे रखने में इसका कंपन में बहुत फायदा होता है और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न हो सकता है। Vaisheshika Prabhu, they would go and install the book in someone's house. तो वैशेषिक प्रभु नाम का एक भक्त है, वो घर पे जाके श्रीमद् भागवतम का स्थापन करके उसका आरती करता They try to find a prominent shelf to put it on. तो हमेशा So that, you know, they don't just keep it in the box. So they can see it. And they get purified in seeing it. तो उसके लिए स्पेशल Maybe they look at it. The children look at it. तो ये श्रीमद् भागवतम का स्पेशल जो अलमेरा रख के उसमें स्थापन करता है और उसका फायदा बच्चों को भी मिलता है। घर पे जो कुछ
उसका दर्शन करते हैं उसका भी फायदा मिलता है। In Africa, we had one Indian man. He was a consulate or something for that country. तो अफ्रीका में एक व्यक्ति था, वो उस जगह का काउंसलर था, वो And भारतीय था। he had some books. उसके He पास helped us quite a bit. उसके पास कुछ पुस्तक था, And we had some books that were donated actually from China. It's a French-speaking country, and they had some Bhagavatam, a few volumes, very opulent, fancy one they made in France, golden lettering on it. तो उस समय फ्रेंच भाषा उधर प्रचार था और फ्रेंच भाषा में पुस्तक था, बहुत सुंदर सा। So I was telling this devotee there, you should give him these books. तो वह एक भक्त को बता रहा था कि ये पुस्तक वितरण करना चाहिए। And he was, give? No, we have to sell, we can't give. दान Give नहीं- something. Anyway, he finally agreed. वो दान नहीं देना चाहता था, फिर भी मैं उसको So it's like 4 or 5 books, and it's very beautiful. Looks like like old-fashioned book with all kinds of stuff. The cover is not pictures, but it's carved in golden writing and everything. बहुत सुंदर था वो पुस्तक, उसका कार्विंग वगैरह हो Very के expensive. और बहुत महंगा भी था। So he kept that on his desk. तो उसका टेबल पे रखा था, डेस्क पे रखा था। And since he was a lot of Africans, big African people were coming to his office. तो उसका ऑफिस पे बहुत सारा अफ्रीकन लोग आता था। And they would say, what's that book? They never saw a book like that. तो उसने ऐसा पुस्तक कभी नहीं देखा था। And he would tell them, and he sold many. और They वो bought them for a high price. तो वो उन लोगों को बेचता था। Giving it away was a good idea. You give to the right person. तो वो बेचता था वो पुस्तक। But mainly we want to read because it's Krishna. We can associate with Krishna. तो ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका कृष्ण भावनामृत में आने के लिए। You can associate with Balaram, can associate with Parikshit Maharaj, Yudhishthira, Draupadi, all these. It was really association. They're actually present. Narada Muni is there. तो महाराज संघ के बारे में बता रहे थे पुस्तक के माध्यम से जो युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, नारद मुनि, द्रौपदी। Prabhupada said Narada Muni has kindly appeared on these pages. तो नारद मुनि, श्रीला प्रभुपाद बता रहा था कि ये नारद मुनि ये पुस्तक के रूप में आया है, पढ़ने के रूप Who में। would like to meet Narada Muni? It'd be nice, huh? If somebody told you Narada Muni wants to meet you, would you say, oh no, I'm busy? अगर किसी को बताया कि नारद मुनि आपको मिलना चाहता है, कोई बताएगा कि मैं बिजी हूँ, I don't have time. मेरे पास समय नहीं है। No, I think we, what they want. And what to speak, it's Prabhupada in every word, तो श्रीला प्रभुपाद जी हर वाक्य में ये प्रस्तुत करना चाहता था। Everybody's always asking, what about your association with Prabhupada? But my association with Prabhupada mostly, practically only from the books and listening to classes. जो मेरा जो श्रीला प्रभुपाद जी का जो कनेक्शन है वो है पुस्तक रूप में और जो लेक्चर का रूप में सुन के। And now there are recordings of Prabhupada in Hindi and Bengali. तो अभी तो हिंदी They're और available. बंगाली में भी श्रीला प्रभुपाद जी का रिकॉर्डिंग है। Not so many, but there's ज़्यादा नहीं, फिर भी those are online. Everything's there. ऑनलाइन भी है आजकल। So at the time of Prabhupada, when I was there, we didn't have any recordings. जब मैं श्रीला प्रभुपाद समय था तो उस समय रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था। Maybe some devotees, but even recorders were not common. जो रिकॉर्डर्स उतना पॉपुलर नहीं था उस समय पे। Somehow Prabhupada made sure from the very beginning they had a tape recorder. तो श्रीला प्रभुपाद जी का पास एक टेप He रिकॉर्डर was था। planning, but it was like a 10-kilo thing.
वो बहुत हेवी This था, big, you know. 10 किलो का वजन था. Had these big reels of tape, and they would jam up a lot because he got old ones. तो प्रभुपाद के पास बहुत पुराना वाला था और रील के साथ जो But वजन वाला. he made sure that everything got recorded. तो प्रभुपाद जी का ये ध्यान देकर किया था कि वो रिकॉर्डिंग हो, उसका पूरा लेक्चर रिकॉर्डिंग हो सके. And then miraculously, they saved it. और पूरा In spite of all the moving devotees were doing it. और जो चलचित्र भी Gradually they got high quality dictating machines for recording. तो उसके बाद हाई क्वालिटी डिक्टाफोन मशीन्स पे Then they रिकॉर्डिंग हो रहा had था. cassette players. कैसेट प्लेयर्स भी. But they didn't start marketing, them until I don't know when. तो उसके बाद वो लेक्चर्स मार्केटिंग करना शुरू किया. There were some kirtans, but then gradually it built up, and then they started, and then they're all available. Now they're all तो आज हमारा free online. हाथ में पूरा फ्री ऑनलाइन मिलता है सब. Prabhupada.org or something. Anyway, everything is there. तो सब कुछ है उधर. In those days, Prabhupada would write a letter, but no one ever saw it except the temple that it was written to. उस समय उस जमाने में जो प्रभुपाद जी ने जो पत्र लिखा है वो टेम्पल प्रेसिडेंट के अलावा दूसरा कोई नहीं देख पा रहा था. But he also made sure that all his letters had a copy that was saved. और जो उसका कॉपी पूरा सेव करके रखा था. Not in the early days, but gradually. बहुत पुराना जमाने में नहीं, फिर भी Then that became available. आगे जाके, और वो सब आज हमारे साथ है. And then all the books, more and more come. पुस्तक भी वैसे ही था. So now everybody has access to everything, plus all these other books about Prabhupada and other comment, and so many people lecturing Bhagavatam, Bhagavad Gita. तो अभी सभी को एक्सेस मिलता है कि श्रीला प्रभुपाद जी का पुस्तक का और दूसरा पुस्तकों का भी. So we usually say before Bhagavatam, Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swasthaya Mahat. Right? Everybody knows what that means? तो अभी जो बताया हुआ श्लोक, किसी को उसका अर्थ पता है? Means Idam Bhagavatam Nama. The name is Bhagavatam. The name is Srimad Bhagavatam. Beautiful story of the personality of Godhead. भगवान का लीला के बारे में बता रहा था. Purana Brahma Samitam. Is a Purana means very old, and it's completely spiritual. जो पुराना और दैविक है श्रीमद् भागवतम. Uttama Shloka Charitam. It's topmost slokas and songs. सर्वश्रेष्ठ. Shakara Bhagavan Rishi is written by Vyasdev. और वो लिखा हुआ है व्यासदेव जी ने. Maturity. And Nishayasaya Lokas is it's auspicious for everyone. सर्वश्रेष्ठ है. Dhanyam Swasthaya Nama. You get wealth, you get everything. धन. So it's explaining itself. It's Krishna. Bhagavatam is Krishna. Bhagavad Gita is Krishna. श्रीमद् भागवतम कृष्ण है और भगवद गीता कृष्ण है. So we want to take advantage of it. तो हमको इसका फायदा उठाना चाहिए. Reading it regularly. हमेशा पठन करके. Or hearing someone speak it. और किसी का वाणी से सुन के. Prabhupada gave us the 10th canto in the Krishna book. That book is really amazing book. श्रीला प्रभुपाद जी ने 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का कृष्णा बुक के रूप में दिया है. And that's the essence of all the scriptures. तो उसमें पूरा संक्षेप में है
सार है उसमें। So, and Bhagavad Gita is also the essence. It's Krishna speaking everything. भगवत गीता भी वैसे ही है कि कृष्ण भगवान खुद बता रहे हैं। The Bhagavatam, it's Krishna, so it's the biggest and the smallest. श्रीमद् भागवतम कृष्ण ही है, सबसे छोटा और बड़ा भी। Everything is in the first verse of the Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम का पहले श्लोक में सब कुछ बता रहा है। The rest of the Bhagavatam is to explain the first verse. But everywhere is like that. You can go anywhere. व्यासदेव जी ने सब पहले श्लोक में ही श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया। But then we have 4 verses that are said to be the essence. तो उसके बाद जो 4 जो श्लोक Because है, they're telling us what everything is all about. तो Then we उसके have all the leelas and all that, so many things. तो वो 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवतम में उसका संक्षेप है और बाकी जगह पे भी उसका लीला बता रहा है। In Bhagavad Gita we have also 4 slokas, we call them seed slokas. भगवत गीता में भी चतुश्लोकी है। And seed, everything grows from a seed, right? जो Even our bodies. But बीज से बनता है। usually we think of it for the plants. There's a seed. तो पौधा में भी बीज से बनता है, पौधा भी। So you've all seen banyan trees, right? किसी ने banyan वृक्ष दिया है, देखा है? We don't have here, अशोक वृक्ष। but in India many. They're very big, the biggest trees. But the seed is super small. तो उसका जो बीज होता है वो बहुत छोटा है और जो वृक्ष है बहुत बड़ा है। But if you put that in the ground and it gets sunlight and water, this huge tree will come out. तो It'll अगर keep वो growing and growing and never stop. अगर वो बीज धरती पे डाला और पानी और सूरज का रोशनी मिला तो बहुत बड़ा बनता है। So the seed, so many things. In the Bhagavad Gita, there's a seed in the 10th chapter. भगवत गीता में भी 4 verses cover everything. Aham sarvasya prabhavo, I am the source of everything. तो भगवत गीता में भी 10वां अध्याय पे चतुश्लोकी के बारे में बता रहा है, हम सर्वस्य प्रभो। Matta sarvam pravartate, everything comes from me. Right? Krishna says the same thing twice. तो मेरे से सब कुछ आता है। वो कृष्ण Iti भगवान- matva bhajanti. One who has good intelligence and knows how to worship me. That's all you have to know is that everything comes from Krishna. जिसके पास बुद्धि है वो मेरी पूजा करती है, करता है, मेरे को ही मानता है। Everybody knows that verse, you can repeat. Aham sarvasya prabhavo, Aham sarvasya prabho, matta sarvam pravartate, matta sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, iti matva bhajante mam, buddha samanvita. Buddha bhava samanvita. Okay, it sounds like many know it. Someone else want to say it without looking? किसी को ये श्लोक Huh? आता है तो बताने से कोई Aham sarvasya prabhavo, Aham sarvasya prabhavo, matta sarvam pravartate, matta sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, iti matva bhajante mam, Buddha bhava samanvitah, bhava samanvita. Okay. And what's the next one? Machita mattakata pranam, modhayantas shantite. कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। Kantayantas chamam nityam, tushyanti cha ramanti cha. That devotees, they're always thinking of me, their mind is fixed on me. जो भक्त हमेशा मेरे बारे में सोचता है, अपना ध्यान मेरे ऊपर केंद्रित करता है, And
then they're always tushanti cha, ramanti cha. Tushanti means satisfied. You don't need anything. शांति का अर्थ है तृप्त है तृप्त, तुष्टि का अर्थ है तृप्त, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं. Like if you eat a lot and somebody offers you more food, you know. ये जैसे कि अगर आपका पेट भरा तो कोई आपको फूड ऑफर करे तो आप बोलोगे नहीं. We should be satisfied with whatever we get. और जो भी हमें मिलता है, Just don't worry about the past or the future so much, because if we're living right now, the future will be good. वो पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, मतलब भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में परवाह नहीं करता. And वो the past is finished, can't change it. यस, वो सोचता है कि पास्ट जो बीत गया वो बस केवल अभी पे विश्वास रखता है और भविष्य के बारे में नहीं सोचता. And Ramanti means spiritual bliss, happiness. रमंती का मतलब है स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक आनंद. यस. So those who are busy with Krishna Katha, Kathayantas Chamam Nityam, they're always talking about my Katha. They're satisfied and they're blissful. तो जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, जो उनके बारे में सोचता है, वो हमेशा ही अंदर अपने हृदय के अंदर खुश रहता है. Tesham satata yuktanam येषां सत्ते युक्तानां Jani Priti Purvakam भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं Cha. येन मामुपयान्ति Okay, again. येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं Buddhi-yogam Cha. ददामि बुद्धियोगं तं येन Upayanti te. येन मामुपयान्ति ते. Yeah, that's a very nice one. What is it? Translation? The one who's always engaged in my service with love and devotion. जो हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है, प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ. I give the knowledge that they can come to me. Krishna gives it. मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वो मेरे को प्राप्त हो सके. So that's a real thing in service. सो यही एक अच्छी सेवा है कि हम भगवान को प्राप्त कर सके. Without service, there's scholars and people. They actually know all the slokas, but they don't have any devotion. They don't understand anything. They it's just another thing they know. बिना श्रद्धा और बिना सेवा के वो कुछ नहीं जानते, उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता और वो भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते. And they'll say, yeah, I know that. Yeah, I know. वो हमेशा ये सोचते हैं Vaishnavas do like this. Yeah, Buddhists do this. They know everything, but वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है. लाइक बुद्ध ऐसा करते हैं, it's their job, you know. क्रिश्चियन ऐसा करते हैं. वो सोचते हैं कि सब कुछ पता है उन्हें. But someone else that might not know very much, but they have devotion, Krishna will guide them how to go back to God. इसके विपरीत अगर कोई भक्त है, उसे कोई भी ज्ञान ना हो, लेकिन वो भगवान के प्रति श्रद्धावान है और भगवान की सेवा करना चाहता है, तो कृष्णा उसे बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि उस तक पहुंच सके. That's Krishna's cause of mercy. ये भगवान की दया है, कृष्णा की दया है. Right? What's the next one? What is it? Teshamevanukampartam. Teshamevanukampartam. अहमज्ञानजं तमः Hamajnanajam tamah. नाशयामात्मभावस्तो Nashayam bhavavasto. ज्ञानदीपेन भास्वत. Jnanadipena bhashvata. And Krishna, in the heart, he lights up, turns on the lights, so you can see. Right? You have a translation? To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. In Hindi? Or Bangla? मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ. Of course, then we have
when Govinda Dasi and her husband, they were Prabhupada's secretaries, and he was trying to teach them Bangla. गोविंद दास और उनके पत्नी जब बंगाली में टीचिंग कर रहे थे, बंगाली में प्रचार कर रहे थे, So he was teaching one verse. तो वो एक श्लोक का प्रचार, एक श्लोक के बारे में पढ़ा रहे थे। Vande Shri Krishna Chaitanya वंदे श्री कृष्ण चैतन्य Nityananda Sahodito नित्यानंद सहोदितो Gododaya Pushpavanto गुरुदाय पुष्पवंतो Chitto Samdotamonudo. And every time they would come in his room, he'd say, do you know that verse? तो हर बार वो यही बोलते हैं कि आपको ये श्लोक पता है। So we don't have to translate that one, right? Everybody understands the language. इसके अनुवाद की आवश्यकता नहीं। So Krishna is saying, I turn on the lights with a shining torchlight of knowledge. I destroy the ignorance. So कृष्णा कहते हैं मैं उनके हृदय में वास करके उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। If you're in the dark, you don't know what's what. So अगर आप अंधकार में तो आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। It doesn't take very much light. But कृष्णा उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। One time I was traveling in America in the West, and there's a famous place, Bat Cave, a huge cave. So No. ओके, महाराज अमेरिका में ट्रैवल करते हैं, उस जगह का नाम था केव। It goes way down underground. So हम अंडरग्राउंड नीचे गए। Millions of those bats. So वहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ थे। Every night when it starts to get dark, they come out, and it's just like a big cloud for like So जैसे अंधेरा होता तो सारे चमगादड़ बाहर आते थे। half hour or तो more. ये कैसा लगता था जैसे काला बादल हो, All these. और वो हमेशा उड़ते थे। They're all blind, but they never bump into each other. वो चमगादड़ जनरली अंधे होते हैं लेकिन आपस में नहीं टकराते कभी भी। Some kind of radar. उनके मतलब दिमाग में कुछ रेडार टाइप का होता है। So they took us down in that cave. You walk down the stairs. It was so dark. So They turned off the lights. so वो नीचे गुफा में गए और नीचे बहुत डार्क था, जैसे कि कोई लाइट नहीं आता। Couldn't see anything. वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। Nowhere, nothing. वो कुछ देख पाने असमर्थ थे। Then the guide, he just lit one match. So उस व्यक्ति ने जैसी एक मैच मतलब माचिस की तीली जलाई। So you couldn't see clearly, but you could see everything. You could see all the shape. You could see just one match. So उससे पहले वो कुछ नहीं देख पा रहे, जैसे एक माचिस की तीली जलाई तो अब वो सब कुछ देख पा रहे थे। So the same thing. One devotee chanting in the midst of all this darkness and ignorance. It's just so powerful. So उसी प्रकार एक भक्त जो चैंटिंग करता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, Any devotee. उसके हृदय में भी ऐसे प्रकाश प्रज्वलित होता है जिससे कि वो सब कुछ देख पाता है। So Lord Nityananda and Lord Chaitanya, they appeared like the sun and the moon. So Lord Chaitanya चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उसी तरह प्रकट हुए जैसे कि चंद्रमा और सूरज। The sun lights up everything in the daytime and it's hot. Sunlight is everything in daytime and in dark moon. And the moon at night, but it's cool. Yes. डे टाइम में सन जो हॉट होता है एंड रात में जो है चंद्रमा ठंडा होता है। So when there's a full moon or even half, it's a lot of light. Yes. So मून आधा होता है तो वो लाइट देता है। Can't see clearly like the daytime, but you can see the basic. Find your way around. So अंधकार में भी हम देख पाने में समर्थ रहते हैं। And they dissipate the dense darkness of Kali Yuga. So उसी प्रकार वो ज्ञान जो है कलयुग के डार्कनेस को दूर भगाता है। And then special mercy for us. वो क्या है हमारे लिए For the whole world. स्पेशल दया है हमारे लिए। And when Krishna disappeared, then the sages were asking, now that Krishna is gone, who will protect knowledge? जब कृष्णा ये धरती छोड़ के चले गए तो सारे जो ऋषि मुनि थे वो ये बोल रहे थे कि हमें अब कौन प्रोटेक्ट करेगा। That's one of the basic questions of the Bhagavatam. So यही भागवतम का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। 6 questions. 6 क्वेश्चन, बेसिक 6 क्वेश्चन। And he said, who are not, the Srimad Bhagavatam has appeared. तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम अपीयर हुई। Poor are narcos. It's just like the sun.
to dissipate the dense darkness of Kali Yuga. ये उसी तरह है जैसे कि सूरज की रोशनी कलयुग रूपी अंधकार को दूर भगाती है। So Krishna is still present. सो कृष्ण अभी भी प्रेजेंट है, The उपस्थित है। name, books, सो and बुक्स the devotees. विद नाम के साथ और बुक्स में अभी भी प्रेजेंट है कृष्ण। And prasad. एंड प्रसाद में भी, प्रसाद के रूप में भी। It's the one nicest, most merciful. यस, तो कृष्णा जो है मोस्ट मर्सीफुल है, सबसे दयावान इस ब्रह्मांड के अंदर। Sadham as much as possible. And teach people about Krishna. सो वही हमें करना चाहिए, हमें सबको कृष्णा के बारे में बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। I was going to go to that temple in Dubai. सो महाराज जी दुबई में टेम्पल में थे, So I didn't know exactly how to get in there. So I got in, but I was by the Shiva side. सो महाराज को पता नहीं था अंदर कैसे जाना है। And it was so crowded outside. Couldn't walk, just come on. सो वहाँ बहुत ही ज्यादा क्राउड था और चलने में असमर्थ थे। There was one nice sadhu there, or whatever they are, and he told me that Krishna temple's over this way. But the Krishna temple was only a few people. सो वहाँ पर एक व्यक्ति थे, साधु टाइप व्यक्ति थे, उन्होंने महाराज को बताया कृष्णा टेम्पल इस साइड है। Because they're thinking Shiva's going to give me money. Krishna's going to take it away. सो कृष्णा उन्हें भी अपने धाम ले जाएंगे, They don't know. उन्हें नहीं पता। But somehow that was, Cricket asked why the devotees of Shiva himself is completely renounced, but his devotees are rich. सो Shiva doesn't even have a house. शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, वो खुद कुछ नहीं, रिनाउंस्ड है और सब छोड़ के कैलाश पे है, लेकिन वैराग्य में है। Kailash is very opulent, but he doesn't live with it. But the devotees of Shiva are rich. तो शिव भक्त जो है वो बहुत अमीर होता है, धनवान होता है। And Vishnu is opulent. His तो devotees विष्णु are- भगवान ऐश्वर्य चकित है, भाव में They रहते हैं। think, but not all. There's many rich Krishna devotees also. तो कृष्ण भक्त भी अभी बहुत धनवान है And there's many poor Shiva devotees also. और शिव का भक्त Somehow they get that idea. गरीब भी होता है, तो दोनों तरफ से है। But material opulence is not important. तो भौतिक जो ऐश्वर्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। The devotee is satisfied with yadrichaya, labhatushta, whatever comes automatically. तो भक्त किसी भी तरफ से संतुष्ट होता है। So that's the holy name. तो वैसे ही भगवान का जो नाम, Then you can be happy. और वो नाम से वो जप करके वो बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। Money, can get you a lot of things, but those things, you might get a little happy for a few minutes. Even now, psychiatrists are telling people like that. Don't just buy something. It'll only make you happy for a couple of minutes. You get new clothes, you get a new car, and then it's just another car. You have to fix it. Right? धन जो होता है वो थोड़ी समय के लिए तृप्ति देता है, जैसा कार खरीद सकता है या तो दूसरा वस्त्र खरीद सकता है, वो थोड़ा समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं। There's so many hair cutting, Now in America, they have these homes for old people, होम्स old age homes. तो अमेरिका में अभी है जो Yeah, बुजुर्ग लोगों के लिए रहने का अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम। So they have a beauty shop, these old ladies, they fix their hair really nice, and they feel good. But how long is it? तो उन Feel refreshed. बुजुर्गों को सौंदर्य का शॉप होता है, जो दुकान होता है उसका सौंदर्य का बढ़ाने के लिए, कितना देर तक
It's Kali Yuga. It's predicted that beauty will be judged by hair. कलयुग में ये जजमेंट है कि सौंदर्य का बाल से तुलना करता है। Beauty shop. ब्यूटी शॉप। That's a haircut. And it's a good business. और वो बहुत अच्छा बिजनेस भी है। Here it's very cheap in Dubai. लेकिन इधर तो बहुत सस्ता है वो। I don't know what the women's haircuts are. मुझे पता नहीं फिर भी। But that's why devotees keep shave or very short hair, very simple women just keep it straight. तो इसलिए भक्त लोग जो मुंडन करता है और जो माताजी लोग सर पे साड़ी डालता है, पल्लू डालता है, They want to develop a beautiful consciousness. तो उनका भावना बढ़ाना चाहता है। That's what कृष्ण भावना। it's really beautiful when someone is kind and loving and compassionate. तो प्रेममय होता है सब भक्त। And the most kind thing you can do for anybody is to give them the holy name. तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी को कृष्ण भावना, कृष्ण का नाम दे सकता है। It's the most valuable thing. तो सबसे अमूल्य रत्न है वो। So there's no price because nobody could pay enough what it's worth. तो उसके लिए कुछ देना नहीं चाहिए। Just give it away. तो देना दान ही करना चाहिए। नाम People का। are foolish. They'd rather get something that's expensive, some जो kind of meditation or mantra or something. जो व्यक्ति मूर्ख है, जो बहुत महंगा वाला जो मेडिटेशन वगैरह पे समय निकालता है। Because to get the full benefit of the holy name is expensive. अगर पूरा फायदा उठाना चाहिए तो जप के बारे में वो बहुत मुश्किल है। Because we have to give up to false ego. तो हमारा जो Nobody wants to give that up. अहंकार त्याग करना पड़ेगा। There's a story in the Bible, it's famous, some of the very famous things of Jesus. तो बाइबल में ऐसा एक कथा है जो जीसस के बारे। So the early Christians, they were very renounced. Nothing. Gave up everything. जो पहले जो ईसाई मत मानता है वो बहुत renounced। And so one time he met one rich man, young man. तो एक व्यक्ति बहुत अमीर आदमी को मिला, धनवान आदमी को। And he came, Rabbi, teacher, please, give me blessing. तो I want to go to heaven. तो बता रहा है कि मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। And Jesus said, okay, give up everything. They had a group and they would put everything and everybody just give what they need. Nobody had their own stuff. तो If we preached like that, we wouldn't get very far. जीसस बता रहे थे कि सब कुछ त्याग कर दो। But many were joining. He said, no, my father built up the business and I went to Harvard and I built it up even more. And no, I have to keep it. Can't I, some way I can pay my way to heaven or something? तो वो बता रहा था कि मैं त्याग नहीं करेगा क्योंकि मेरा बाप ने बनाया, अभी मैं बहुत प्रयत्न किया ये बनाने के लिए, मैं कुछ पैसा खर्च करके स्वर्ग नहीं जा सकता है क्या? Jesus said, it's easier for a camel to go through the needle hole. तो ऊंट के बारे में जीसस बता रहा था कि ऊंट एक सुई के अंदर से कैसा जाएगा, Than for a rich man to go to heaven. वो सुलभ होता है कि ऊंट, लेकिन In other words, you want to be rich when you get there. You have to leave it all behind. तो अमीर धनवान आदमी सब कुछ छोड़ के ही जाना पड़ता है दुनिया से जाते वक्त। If you're too much attached. तो उसमें बहुत आसक्ति लगा के फायदा नहीं है। But say you have a secret bank account in Switzerland or wherever they have. तो Nobody knows except you. क्या फायदा होता है कि स्विट्जरलैंड में एक अकाउंट रह के
किसी को पता नहीं है. Then the आप man क्या करें? dies. They didn't have time to tell anybody. हमारे पास ऐसा समय भी नहीं होता है कि किसी को बताने के लिए. He can't come back in the next life and, as a dog and say, "Excuse me, I have this bank account." तो अगले जन्म में कुत्ता बन के आके फायदा नहीं है कि मुझे मेरे पास एक बैंक अकाउंट था पिछले जन्म में. That's how Switzerland got rich. इसलिए स्विट्जरलैंड इतना अमीर है, पैसा वाला है. All these people put their black money there, and they die, and nobody knows. Even the bank doesn't know who it was. तो ऐसा काला So the bank धन takes all the money. धन रख के जो गुजर जाता है, इसलिए वो अमीर है. There's a joke. One man, he wanted to go to heaven. तो एक चुटकुली है. So he went to the temple or the church. He gave a donation, nice donation. तो वो मंदिर में जाके दान देना चाहता है. And he kept a receipt. तो उसके पास रिसीट था उसका. So when he died, he went for judgment. तो जब मरने के बाद वो As the जजमेंट के Christians लिए have it, it's like a line, and somebody decides you go to heaven, you go to hell, like Yamaraj. So he said, "No, I should go to heaven. I'll show you. I gave a donation." तो वो ये कह रहा था कि जजमेंट के समय मेरे पास उसका पर्ची है जो मैंने दान दिया है, तो मुझे स्वर्ग लेना चाहिए, So लेके जाना the चाहिए. person at the gate said, "Okay, just wait." तो बता रहा था कि ये देख के कि दिस वे. And he went to God and he said, "This man, he says he gave a donation, and he thinks he should go to heaven." तो भगवान के पास के जात के ये जज कर बता रहा है कि ये स्वर्ग जाना चाहता है क्योंकि उसके पास And रिसीट he है जो दान wasn't. दिया हुआ. Otherwise, he was sinful man. So God said, he took out his money and said, "Here, give the money back and send him." तो भगवान ने वो जो दान दिया हुआ पैसा वापस देके उधर चले जाओ. So that's basically what people think. I gave donation. But if you don't live right, you can't even go to heaven with to speak of spiritually. तो पूरा बुरा काम करके दान दे के फायदा नहीं है कि मैं भगवान के पास जाएगा. But you don't have to live in a cave. You just have to know everything belongs to Krishna. तो हमको ये पता चलना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का. His body belongs to Krishna. The children belong to Krishna. Everything. So we have Krishna given it to us to take care of. So we take care of it. तो सब कुछ जो कृष्ण भगवान ने दिया है तो हमको वो संभालना चाहिए. Some people he gives unlimited wealth. तो किसी व्यक्ति को भगवान धन Some he देता है, doesn't. He takes छप्पड़ away. फाड़ के देता है. Right? Like you say, like Jayapataka Maharaj, he gets so many disciples. तो जैसा परम पूज्य जयपताक स्वामी महाराज बहुत शिष्यों को He's able to deal with it somehow. Krishna's doing that. तो कृष्ण भगवान वैसा दिखा रहा है. But that's how it works. Whatever we get, we should offer everything to Krishna. तो हमको जो कुछ मिल रहा है वो कृष्ण भगवान को समर्पण करना चाहिए. Whether you're rich or poor, you give everything to Krishna. You don't lose by giving to Krishna. तो हम गरीब या अमीर होने दो, धनवान या होने दो, फिर भी हमको सब कुछ भगवान को देना चाहिए, कृष्ण भगवान को देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए. Some people think, well, I can't afford to offer my food to Krishna. तो कभी-कभी भक्त लोग ये सोचता है कि मैं I've heard that. कृष्ण को अर्पण भोग नहीं लगा सकता है. One pujari at one Hindu temple in Fiji, he said, I don't offer my food to Krishna. तो फिजी मंदिर में जो एक पुजारी बता रहा है था कि मैं भोग नहीं चढ़ाना चाहता हूँ भगवान को. He said, because I eat onion and garlic. क्योंकि मैं आलू और प्याज और लहसुन खाता हूँ. And Krishna doesn't like that. और कृष्ण वो पसंद नहीं करता So है. I don't offer. तो मैं And he वो said, besides that, I'm very busy. And if I offer to Krishna one day, he'll want me to offer every day. So I don't. But he had the temple. Many people, he was
showing the deity every Sunday. And तो भगवान को सभी को दिखाता था, लेकिन he didn't know it was Krishna. Just business. भोग नहीं चढ़ाना चाहता। The devotees know Krishna is eating, we're feeding Krishna. He sees us, he hears us chant, he sees us dance. तो कृष्ण भगवान को ये पता चलता है कि भक्त हमेशा कृष्ण को मानता है, नाचता है, Person, supreme person. और परम पुरुष है। So it's so simple. बहुत सरल है वो। Bhagavatam is actually simple. श्रीमद् भागवतम बहुत सरल है। I asked one lady, she said, I have the Bhagavad Gita, this American lady. एक अमेरिकन महिला से Many पूछा, people, women. I said, did you read it? She said, well, it's so complicated, I tried to read it. तो वो महिला बता रही थी कि वह महिला से पूछा मैंने कि श्रीमद् भागवतम पढ़ा है क्या, तो वो बोल रही थी कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। I said, no, you're complicated. The Bhagavad Gita is simple. तो आप खुद कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन भगवत गीता बहुत सरल है। And she said, yeah, that's right. She understood. Our minds are so complicated, the world's so crazy. But the Bhagavad Gita is simple. Hare Krishna. Krishna is God. Krishna is the source of everything. That's all you have to know. तो वो महिला को समझ में आ गया Everything's coming कि from me. उसका मन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन भगवत गीता बहुत सरल है। और Gauranga Prabhu was telling us, when in the village, one mother, she went to the village sadhu. गौरंग प्रभु ये बता रहा था कि एक And she was very worried. एक विलेज में एक साधु के पास जा रहा था। She said, my son is chanting Hare Krishna. तो मेरा पुत्र जो है वो हरे कृष्ण का जप कर रहा है। So the sadhu said, good, that's a Maha Mantra. साधु बता रहा था कि बहुत अच्छा है कि वो महामंत्र जप कर रहा है। But she said, but he's not worshiping the Kula Dev. तो वो कुल देवता को मानता नहीं है ये And the sadhu said, well, if you're connected to the main office, you don't have to bribe the branch office. तो साधु बता रहा था कि अगर मूल भगवान के पास वास्ता रखता है तो उसका ब्रांचेस में जाने का जरूरत ही नहीं है। Like, people bribe the policeman, but you have to judge. तो Policeman can't. तो If you're in front of the judge, you don't bribe the policeman. तो जो रिश्वत देता है वो पुलिसमैन को देता है, जज को नहीं देता It है। won't help you. On the road, it might help you, depending on what country you're in. जगह के हिसाब से हम Right. करना पड़ता है। Like in Nigeria, the police will stop all the cars on the road. तो नाइजीरिया में ये पुलिस जो है वो पूरा कार को रुकाता है And they say, let me see your papers. और पेपर दिखाने के लिए बता रहा है। And they hand them, a few paper money. And तो अगर कुछ पैसा दिखाए तो if you show them your registration and license, they get mad. रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिखाए तो उसको बहुत गुस्सा आता है। But can't do that. सभी जगह पे वो ऐसा नहीं कर सकता। But you can never do it with Krishna. You can't fool Krishna. तो हम कृष्ण को ऐसा नहीं कर He सकते। knows. So we have to बहुत pray. नहीं बना सकता। वो सब कुछ जानता है। Get वो सब कुछ serious. जानता है। We don't know how long we're going to live. तो हमको पता नहीं हम कितने साल रहने वाला जिएंगे। But while we're living, just, doesn't matter. Just utilize it. It doesn't matter how long you live. तो ये बात नहीं है कि हम कितने साल जिएगा। Lord Chaitanya, what, 42 years or something? चैतन्य महाप्रभु का 42 years था। Shankaracharya was even less than that. शंकराचार्य का जीवन उससे भी कम था। Jesus Christ was 32 years. जीसस क्राइस्ट का 32 years था। But they did so much. तो ये सब कुछ Some of our acharyas, of course, lived very long. But that's not
the point. It's what you do with your life. तो ये छोटा समय में हम कितना करते हैं उसके मान्यता रखना पड़ता है. So thank you very much for so many here. It's very wonderful. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को. बहुत भक्त लोग हैं इधर. And we actually have a temple, huh? That's just a temple. Right? Yes, कुटीर. Somebody, a few of the boys live here. Yes. Take care of it. All of this stay here. 1, 2. Yeah, Pujari and everything. Yeah, it's great. Didn't know we had that in Dubai. But anyway, that's a very powerful way. If we make a big temple, then it's a show, and then you have to compromise so many things, and for the public and the government and everything. But if you just have a lot of small places, nobody cares what you do. It can be very, you can spread all over the universe. Okay, so thank you very much. It's 10:30. So thank you very much. Very good crowd. परम पूज्य कविचंद्र स्वामी महाराज की जय. परम पूज्य कविचंद्र स्वामी महाराज की जय. परम पूज्य कविचंद्र स्वामी महाराज की जय. His Divine Grace Srila Prabhupada की जय. His Divine Grace Srila Prabhupada की जय. His Divine Grace Srila Prabhupada की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. जय गौर प्रेमानंदे. And this is Ras El Rakhal Kaima. Yes. Rakhal Krishna Desh. Rasan. Rakhal Krishna Desh. Rasan. रस अल खेमा. Rasan. अल खेमा. Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna